ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भागो यहाँ से आप लोग। तो ये सब साइड इफेक्ट आपको बाद में दिखेंगे, अभी आप सब लोग बच्चे हैं तो ये सब एक्सपीरियंस आपको नहीं दिख सकते। अभी दोनों यहाँ पे आके बैठ के बोले कि हम लोग भी मीटिंग करेंगे। कन्नू थोड़ी सी बड़ी है तो वो कह रही नहीं मैं भी करूंगी, आप कुछ भी कर लो मैं भी यहीं पे रहूंगी। और वो दूसरा मेरे नीचे से निकल के जाने लग रहा, मैं प्रेयर करने लग रहा था। चलिए तो यू रिमेम्बर लास्ट टाइम व्हाट वी वर डूइंग? आप लोगों को याद है क्या कर रहे थे हम लोग? बताओ बताओ, वो तो याद रहेगा, इंटरेस्टिंग चीज थी। व्हाट वी वर डूइंग बता। वही प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे हम। हाँ, प्रभुपाद जी के बारे में हम लोग वीडियो देखने लग रहे थे। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, क्या आपको याद है हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? इस प्रभु जी उसका प्रभुपाद जी कहाँ पे पहुंच गए थे? प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंच गए थे। अमेरिका पहुंच गए थे। हाँ, अमेरिका पहुंच गए थे, बिल्कुल सही है। और उससे पहले का कुछ याद है कि किसी को क्या क्या हुआ था प्रभुपाद के जीवन में? कुछ कुछ एक दो भी इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो प्रभुपाद जी के जीवन में हुए थे, जो आपको याद रहे हो। मुरारजी देसाई जो वहाँ पे, आप मुरारजी हाँ देसाई के बारे में बता रहे थे कि वो उनके पास लेने गए थे शिप का टिकट, तो वो नहीं, वो 4 दिन 5 दिन तक वो बाहर बैठे हुए रहते थे। तो एक दिन बुला के उनको पूछे कि हाँ इतना उम्र हो गया है तो अब कैसे जाएंगे वहां पे, अब मरने के लिए जाएंगे वहां पे। तो हाँ वो बोली कि हम नहीं जाने देंगे। तो भी ये पूछे कि अगर आप हमको पिताजी मानते तो मैं भी मतलब आप अगर बेटी हो तुम इतना भी नहीं कर सकते हो। तो वो फिर हाँ, तो इतना दिए, तो करेक्ट। इसको कर दिए, अलाउ कर दिए, फिर वो चले गए। फिर 2 बार हार्ट अटैक आया जीप में। हाँ हाँ, फिर जीप में सभी लोग मिलके कीर्तन वहाँ किए। फिर हाँ, तो फिर पहुंच गए वो अमेरिका सब लोग। ओके। और किसी को याद है कोई कोई भी चीज, कोई भी छोटी सी भी चीज जो आपको याद हो प्रभुपाद जी के जीवन से, जो हमने पिछले बार देखा? प्रभु बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ बेटा बताओ। उसमें ये था कि प्रभुपाद जी सारे हिप्पीज को प्रसाद बना के खिलाते थे। तो हाँ एक हेल्प करने आता है बर्तन धोने के लिए, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं इसी का वेट कर रहा था कि कोई आए। प्रभुपाद जी कहता आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे। तो फिर वो अपने प्रभु फ्रेंड जी जब प्रभु जी एक जब प्रभुपाद यूएसए पहुंचे, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एक फ्लैट बुक किया और वहाँ पे क्लासेस लेते थे। 1 साल बाद वो फ्लैट वहाँ के गवर्नर ने उसके बीवी को किटी पार्टी के लिए दे दिया था। तो फिर उसके बाद वो गार्डन में या फिर एक पार्क में कीर्तन कर रहे थे। तो 1 घंटे बाद उन्होंने वो एक घंटे के लिए आंख बंद करके कीर्तन कर रहे थे। उसके 1 घंटे बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहां पे, काफी सारे लोग वहां पे जमा हो गए थे और सुन रहे थे उनका कीर्तन।
बेटा आपके ना दो इन्फॉर्मेशन मिक्स हो गई हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, जो झांसी में ये हुआ था, झांसी का जो गवर्नर था उसने अपनी वाइफ को किटी पार्टी के लिए दे दिया था। वहां पे प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज शुरू किया था, तो फिर उस जगह से बंद कर दिया गया था। फिर प्रभुपाद वृंदावन चले गए, और फिर ये यूएस का बता रहे आप, जैसे कि ना यूएस में प्रभुपाद हिप्पी लोगों के साथ रहते थे, और उस जगह पे वो वहां पे रहते थे हिप्पी लोगों से। मुझे याद आया, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक्चुअली प्रभुपाल लीलामृत है, आप वो बुक पढ़ेंगे ना आपको बहुत मजा आएगा। मैं बताता हूँ आपको, दिस इज इन 2016। उससे पहले I had read na small Prabhupada Lilamrit is there. There is one very small black color book is there. If you will go to ISKCON anytime, you can purchase it. I think it costs around 70 or 80 rupees. This much small book is there. In that there are pastimes of Prabhupada, but they are very shortcut. But there is one big Lilamrit, and it has around 6 books, 6 volumes are there. So in that detailed pastimes are there. So I remember in 2017 or 18, something like that. So during this period, like January, February, during this time, generally we have very less classes, because in coaching institute most of the students they have their exams and everything. So we have very less classes. So मैं इंस्टीट्यूट में लेके जाता था उस वॉल्यूम को, एक वॉल्यूम को, है ना, और मैं वहां पे जाकर बैठ जाता था। एंड आई हैड सीन दैट आई यूज्ड टू रीड इट थ्रू आउट होल डे। जैसे मान लो किस दिन क्लास नहीं है, तो मुझे इंस्टीट्यूट में 6 घंटे रहना, तो मैं 6 घंटे पढ़ता रहता था उसको। तो 6 घंटे तक, क्योंकि इतना मजा आता था, क्योंकि वहां पे कोई ज्ञान नहीं दे रहा है ना, वहां पे कहानी बताई जा रही है, ऐसी कहानी जो मोटिवेटिंग है। सो बस पढ़ते रहता था, पढ़ते रहता था, पढ़ते रहता था। एंड आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू रीड फॉर अराउंड 6 आवर्स। और मैंने उन 1 डेढ़ महीने में वो सारी बुक्स कंप्लीट कर दी, क्योंकि मैं सुबह जाता था इंस्टीट्यूट में, पढ़ने लगता था, शाम तक पढ़ के वापस आ जाता था। तो उसमें एक पास टाइम आता है, आई विल टेल यू। एक बार क्या हुआ, जब प्रभुपाद यहाँ पे जो लोअर ना बावरी का ईस्ट साइड है उसमें रहते थे, जहां की अभी बात करने लग रहे हैं ना, क्योंकि प्रभुपाद के पास इतने रुपए तो थे नहीं कि बहुत पॉश एरिया में वो अपना फ्लैट रेंट पे ले सके। तो वो क्या करते थे, वो एक ऐसे एरिया में रहते थे जहां पे ना, मतलब कि झोपड़पट्टी टाइप आप कह सकते हो, जैसे अमेरिका का, तो न्यूयॉर्क का। तो उस जगह पे क्या रहता था, बहुत सारे लोग ड्रग्स व्रग्स लेके लेटे रहते थे। तो एक दिन एक आदमी आया, वो बोला कि स्वामी जी मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, चलिए आप मेरे साथ मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाइए। तो प्रभुपाद ने सोचा कि अच्छा बच्चा है ना, वो बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्स भी दिखा रहा था। तो वो प्रभुपाद के साथ, मतलब प्रभुपाद उनके साथ उनके फ्लैट में शिफ्ट हो गए। और एक दिन क्या हुआ, उस भाई ने ड्रग्स ले ली, क्योंकि वो ड्रग्स तो लेता ही था। प्रभुपाद को लगा कि वो कन्वर्ट होने लग रहा है, वो छोड़ देगा धीरे धीरे ड्रग्स। एक दिन उसने ड्रग्स ले ली, और ड्रग्स लेके और वो चाकू लेके, है ना, प्रभुपाद के पीछे भाग लिया। और प्रभुपाद के पीछे भाग लिया। प्रभुपाद अभी आप सोचो कि 70 ईयर्स उनकी एज हो चुकी थी, है ना। प्रभुपाद वहां से उसके फ्लैट से निकले, जल्दी से नीचे आए, और वो बंदा प्रभुपाद के पीछे चाकू लेके भाग रहा है। प्रभुपाद निकल के सड़क पे आके और भाग लिए सड़क पे, और सड़क पे चलते गए चलते गए चलते गए, उस जगह से बाहर आ गए। और फिर जब प्रभुपाद बाद में, जब मतलब कि डिवोटीज वगैरह इस्कॉन बन गया, उसके बाद कहते हैं कि उस दिन मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे क्यों आया, कि ना मैं इससे अच्छा अपने वृंदावन में रह रहा था। वहां पे ना लोग इतनी इज्जत करते थे मेरी, कि ना मैं वृंदावन में आराम से सुबह ना सारे मंदिरों में दर्शन करने जाता था, चैंटिंग करता था, अपना प्रसाद लेता था, आके आराम करता था, और ना भगवान के कीर्तन करता था। और बोला कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, यहाँ पे ना लोग मुझे चाकू लेके मारने के लिए भागने लग रहे हैं। और फिर प्रभुपाद ने सोचा, लेकिन अगर आज मैं चला गया फिर यहाँ से, तो फिर इनके लिए कोई नहीं आएगा। और प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो भाग के आए थे चाकू के डर से। एंड प्रभुपाद अभी सड़क पे चल रहे थे, और अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं करूं क्या, क्योंकि किसी को भी नहीं जानते हैं वहां पे। ही वॉज नॉट नोइंग एनीवन। फिर उसके बाद वो उस बंदे को फोन करते हैं, जिसने जो वो था ना, अभी आएंगे मुकुंद महाराज आते हैं, है ना, उनको फोन करते हैं। और उनको फोन करके कहते हैं कि, क्योंकि अमेरिका वगैरह में उस टाइम पे ये टेलीफोन वगैरह काम करते थे ज्यादा, तो प्रभुपाद उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसने मुझे मारने की कोशिश की। तो वो कहते हैं कि अभी आप कहाँ पे खड़े हुए हैं,
तो प्रभुपाद बताते हैं मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ। फिर वो आते हैं, वो आकर प्रभुपाद को कहते हैं कि चलिए आप मेरे घर पे रहिए, और प्रभुपाद उनके घर पे जाके रहते हैं। और उनके घर पे क्या है, एक रूम है, और एक रूम में वही बंदा और वो उसकी गर्लफ्रेंड वो दोनों रहने लग रहे हैं, और वो लोग भी ड्रग्स लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करते थे प्रभुपाद का। और फिर प्रभुपाद भी उन्हीं के साथ वहां पे रहते हैं एक दिन तक। और फिर वो दोनों क्या करते हैं, वो बंदा और उसकी गर्लफ्रेंड वो दोनों जाके और प्रभुपाद का सामान उठा के लाते हैं वहां से। अब आप सोचिए कि किन परिस्थितियों में वो इंसान रहने लग रहा है। और फिर अगर हम देखें तो बाहर के लोग क्या कह देते हैं कि इस्कॉन का रुपया ना तो अमेरिका जाता है। अरे अब आप सोचो कि एक इंसान इंडिया से गया हुआ जिसके पास एक रुपया नहीं था जेब में, वो इतना स्ट्रगल करने लग रहा है, एंड रेदर देन प्रमोटिंग आवर कल्चर हम लोग क्या कह देते हैं कि अरे ना देखो ना इस्कॉन में नहीं जाना चाहिए, रुपया ना बाहर भेजते हैं ये लोग। तो दिस इज व्हाट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्रीज, कि हम लोग जो भी अपना रहता है उसकी भी वैल्यू नहीं करते हैं, नहीं जो बाहर से आता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा करते हैं। तो अभी ना वी विल सी फर्दर क्या बी क्या हो रहा है। देर आर हंड्रेड्स ऑफ पास टाइम्स, मतलब कि मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप मुझे बोल दें कि ना आप ना प्रपात के पास टाइम्स होने ही है, मैं तो कहूंगी ना आप मुझे बैठा दीजिए एंड आई कैन टेल होल डे पास टाइम्स ऑफ प्रभुपाद, एंड आई लाइक इट सो मच, मजा आ जाता है एकदम। तो मैं जस्ट एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने यहाँ पे ये देखते हैं, आवाज आनी चाहिए। कम कर। George Harrison, who was a member of the Beatles. हाँ, तो अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ ताकि ना आप कनेक्ट कर सके। तो प्रभुपाद अभी जब वहां पे यहाँ पे क्या हो गया था कि प्रभुपाद वहां पे करने लग गए थे। सुना उन्हें, लोग मुझे भिखारियों का डॉक्टर बोलते हैं। ये लोग फुटपाथ पे भक्ति। तो प्रभुपाद अभी वहां पे चैंटिंग करने लग गए हैं लोग, कुछ लोग चैंटिंग करने लग गए और कुछ लोग सिंसियरली आने लगे। तो अभी लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। तो 6 महीने अभी तक इस्कॉन के पास एक जगह है, वो एक जगह है 26 सेकंड एवेन्यू। उस जगह पे एक स्टोर फ्रंट है, मतलब कि एक दुकान है, वो दुकान प्रभुपाद ने ले रखी है और प्रभुपाद वहां पे कीर्तन करते, कुछ लोग आते। अभी जो वो माता जी आई थी, वो माता जी को कहते हैं प्रभुपाद कि आप लोग लंदन जाइए, है ना। तो अभी वो लंदन के लिए निकलने वाले हैं 6 लोग, हस्बैंड वाइफ्स, 3 हस्बैंड 3 वाइफ्स, और उनके साथ एक उनकी 6 महीने की बच्ची। और सोच रहे 6 महीने उनको आए हुए हैं, बस प्रभुपाद से सुनते हुए 6 महीने हुए हैं, और प्रभुपाद ने उन लोगों को लंदन में भेज दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि अभी क्या क्या होता है। Dāso'smi becomes respectfully known as Prabhupada, meaning one at whose feet the masters sit. From Montreal, Prabhupada sends 6 disciples to open a temple in London. Yamuna Devi Dasi remembers. So we went to London that fall, and although we had no permanent place of residence and we were completely dependent on Krishna, somehow or another, by the enthusiasm that Srila Prabhupada had given us in Montreal, we were able to make contact with George Harrison, who was a member of the Beatles at the time. And he was such a pleasant person to be with. He so much appreciated the Hare Krishna mantra that he immediately said, let's make a 45 record. So we'd cut a record, and he was very pleased with it, did a little background music on it, and it was released, and Apple organized tours for us. We went to Germany and France and had television coverage. And in this way, the London Times wanted to do
the Sunday Times wanted to do a feature on us, and we were able to send the report back to Srila Prabhupada with the headlines, Krishna Consciousness Startles London. As people come to him, convinced of the Krishna conscious philosophy, Srila Prabhupada accepts them for initiation, not on the basis of birth, as in the rigid Hindu caste system, but on the basis of... आप लोगों ने बीटल्स के बारे में सुना है? जो भी म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्टेड होंगे उन्होंने जरूर सुना होगा। बीटल्स वर द मोस्ट फेमस पर्सन ऑन द अर्थ एट दैट टाइम। मतलब कि जो भी रॉक बैंड्स है ना, आज के दिन आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा फेमस रॉक बैंड था उन दिनों वो बीटल्स थे। मतलब कि एक बार बंद जस्ट करो। बताया जाता है कि बीटल्स के लिए जब उनका बर्थडे था, एक बीटल्स का, बीटल्स बेसिकली देवर 4 पीपल हु वर अ बैंड, है ना। तो उसमें एक था जॉर्ज हैरिसन, आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिलेगा। जॉर्ज हैरिसन वाज वेरी फेमस पर्सन। और क्या होता है कि जो ये 6 डिवोटी वहां पे गए, लंदन में गए, तो ये लंदन में गए तो ये लोग क्या करते थे, सड़कों के ऊपर, जैसे आपने देखा ना कि कई बार आपको डिवोटीज मिलेंगे कीर्तन करते हुए जाते रहते हैं, तो इस तरीके से ये 6 लोग सड़कों पे कीर्तन करते थे। तो एक दिन, क्योंकि बीटल्स वहीं लंदन में ही रहते थे, तो एक दिन जॉर्ज हैरिसन कार में जा रहा था और उसने देखा इन लोगों को कीर्तन करते हुए। तो जॉर्ज हैरिसन पहले इंडिया विजिट कर चुका था, बिकॉज दीज वर वेरी फेमस पीपल, बहुत ही रिच थे ये लोग, तो वो इंडिया आ चुके थे और वो ऋषिकेश वगैरह सब जगह घूम के जा चुके थे। तो उन्होंने हरे कृष्णा सुना हुआ था जॉर्ज हैरिसन ने। तो जॉर्ज हैरिसन देखता है इन लोगों को और उनको लगता है कि यार ये लोग यहाँ पे कैसे करने लग रहे हैं। फिर उसके बाद वो चला जाता है वहां से उस दिन कार में, तो वहां पे नहीं रुकता है। फिर क्या होता है कि एक दिन जॉर्ज हैरिसन का बर्थडे रहता है, तो जो अपने श्याम सुंदर प्रभु हैं, श्याम सुंदर प्रभु सोचते हैं कि अगर हमने बीटल्स को एक बार भक्ति के बारे में बता दिया या हरे कृष्णा के बारे में बता दिया, तो पूरे वर्ल्ड में वो लोग इसको सेकंड होम बता सकते हैं, क्योंकि उनका इतना ज्यादा आउटरीच है। तो उसके बर्थडे पे उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए थे। मतलब शाहरुख खान वाहरुख खान कुछ भी नहीं है उनके सामने, क्योंकि शाहरुख खान को सिर्फ इंडिया जानती है। आप सोचिए, बीटल्स वर द मोस्ट फेमस पर्सन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा इंग्लिश वर्ल्ड उनको जानता था। तो उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो श्याम सुंदर भी जाके खड़े हो जाते हैं उस भीड़ में। और जॉर्ज हैरिसन घर के बाहर आता है और घर के बाहर आके देखता है वो ऊपर से, तो उनको श्याम सुंदर खड़े हुए दिखाई देते हैं। सिखा है, धोती कुर्ता है, बाल नहीं है, तिलक लगाया हुआ है। तो वो अपने गार्ड को कहते हैं कि जाओ उनको बुला के लाओ ये बंदे को। तो वो गार्ड सीधा आता है और सबको छोड़ता है, श्याम सुंदर का हाथ पकड़ता है और अंदर लेके जाता है सीधा जॉर्ज हैरिसन के पास। और जॉर्ज हैरिसन कहता है कि यार मैंने तुम लोगों को देखा था कीर्तन करते हुए, लेकिन मैं उस दिन मिल नहीं पाया, तुम लोग कहाँ रहते हो? तो ये कहते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे रहने लग रहे हैं। तो बोले कि ठीक आओ ना, हरे कृष्णा महामंत्रा पे रिकॉर्ड बनाते हैं, मतलब कि वी विल टेक आउट अ एल्बम ऑन हरे कृष्णा महामंत्रा। और फिर उसके बाद ये लोग हरे कृष्णा महामंत्रा पे, जो ये माता जी थी, यमुना माता जी, ये लोग एल्बम बनाते हैं। और एप्पल या पता नहीं कौन सा, तो वो इनकी स्पॉन्सरशिप करता है। एंड देन दैट बिकम सो फेमस कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हरे कृष्णा पहुंच जाता है। और जैसे आज के दिन ऐसा नहीं रहता है कि कोई म्यूजिक ना पहले नंबर पे चल रहा है 1 वीक 2 वीक, ऐसे 4 वीक्स तक, 4 वीक्स तक पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सबसे फेमस सॉन्ग था वो था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 4 वीक्स तक सबसे ज्यादा फेमस सॉन्ग था, पहले नंबर पे था 4 वीक्स तक। तो अब आप सोचिए कि जॉर्ज हैरिसन ने वो कर दिया है और इतना ज्यादा आउटरीच हो गया है, तो अब आप सोचिए कि क्या होने लग रहा होगा। एंड दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग, दैट हरे कृष्णा स्टार्टल्स लंदन। तो ये चल रहा है अभी लंदन में। अभी तक प्रभुपाद नहीं आए हैं लंदन में, प्रभुपाद हैज नॉट कम टू लंदन। दीज आर ओनली 6 डिवोटीज जिनके पास रहने की भी जगह नहीं थी। और अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, लंदन में जो आज के दिन इस्कॉन का मंदिर है, लंदन में मेन सेंटर लंदन में है, उसका नाम है भक्ति वेदांता मैनर।
वो जॉर्ज हैरिसन का घर है जो उसने खुद दिया था। तो वो मतलब कि सबसे बड़ा मंदिर है। बड़ा मंदिर क्या मतलब, ना तो कोई उससे बड़ा कोई चर्च है पूरे इंग्लैंड में, ना कुछ भी है। इस्कॉन का मंदिर है वो, क्यों? क्योंकि वो जॉर्ज हैरिसन ने अपना घर ही दे दिया था कि मेरे घर को आप मंदिर बना लीजिए। तो उसका घर अभी मैनर था, पूरा महल टाइप का था। तो वो इस्कॉन का आज के दिन मंदिर है वहां पे, जो जॉर्ज हैरिसन का घर था। And sincerity. In the whole history of Indian spiritual life, no one has ever attempted something as bold and seemingly impossible: to transform Westerners into full-fledged devotees of Lord Krishna. But by his intense spiritual energy and compassion, Srila Prabhupada is successful beyond his own expectations. How old is the movement? But from historical point of view, it is about 5,000 years old. Why has it just begun to really catch on in the Western world? I mean, just recently, in recent years, has it begun to sweep the Western world? Why is this? The Western world, the younger generation were being frustrated with the hippie movement. So, when they saw something tangible, they accepted it. What things would, if everyone in the United States believed in Krishna to the extent that you do, what would happen to this country? How would it be transformed? They'll be very happy and peaceful. There will be no more hippies. What would you describe as a hippie? Someone who smokes. You know better than me. Something extraordinary. The thing that really inspired me the most about Srila Prabhupada was his complete dedication to his devotees. The thing that Prabhupada liked the best was to be with his disciples. It wasn't that he took on large amounts of disciples and then sat back and then just pushed them to do this and that and the other for himself. He did more for us than we ever did for him. And traveling with him personally, I got to see what a tremendous sacrifice he made for us. That even when he was ill, he would still preach. He would still be concerned. He would still be asking after how things were going in the society that he created, how were individual disciples doing. He always had time also to look to our personal needs. He was very concerned. Prabhupada wasn't aloof. All he really wanted was us to reciprocate the love that he gave to us. And if we reciprocated, he would give us more. So my personal experience with Srila Prabhupada was that I found in him a person that I could actually genuinely fully give myself to. हरे कृष्णा। क्या आपको पता है इस्कॉन द्वारा? In Srila Prabhupada's eyes, Krishna consciousness is not an armchair philosophy or a part-time religion. It is a way of life, a transcendental culture that can end man's political, economic, and social problems. To realize his vision, Srila Prabhupada circles the globe 14 times in 12 years, inspiring his followers and discussing Krishna consciousness with all interested persons. His door is open to everyone. Actually, nothing is private property. Everything belongs to God. Rather, we have stolen God's property and claiming my property. That is Australia. The Englishman came here, but he left the property of the Englishman. It was there. America, it was there. And when everything will be finished, it will be there. And they immediately come and claim it is my property and fight. To revive the Krishna conscious tradition in its full richness, Prabhupada envisions God-centered, self-sufficient farm communities based on the principle of plain living and high thinking. The first such community begins on 133 acres in the hills of West Virginia. Prabhupada calls it New Vrindavan, after Krishna's place of pastimes in India.
In 1972, Srila Prabhupada begins a Krishna-conscious primary school system in Dallas, Texas. Srila Prabhupada very practically introduced a primary school system to teach children self-realization along with regular studies. This means that the Gurukul system is unique in that the educators are themselves free of vices. We could hardly find an institution where the faculty members are free of loose sexual relationships, intoxication, smoking, although they may have good credentials academically. That would be rare to find. But in Krishna consciousness, the teacher must also be on a platform of pure devotional service, because the children are very impressionable and they'll learn whatever their educators are actually doing, not just what they're saying. So these were some of the principles that Srila Prabhupada introduced in Gurukula. Srila Prabhupada gradually trains his disciples in the time-honored tradition of deity worship to help them advance spiritually. He explains, "I have introduced this system of deity worship among the non-believers, the atheists. Krishna cannot be understood with our present senses, but by his kindness he agrees to personally appear as the deity to accept our service. When we are attracted to the beautiful form of the deity, we will forget our attraction for material things. And as we serve the deity, we will develop pure love of God. Then our lives will be successful." In Melbourne, Australia, Srila Prabhupada worships Lord Chaitanya, a divine incarnation of Krishna. By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. You are very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu has come to your country to teach you how you become free of all anxiety. This is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Everyone is full of anxiety, but everyone can be free from all the anxieties if he follows the path chalked out by Sri Chaitanya Mahaprabhu. As people are fallen in this age, the method also has been offered very simply. They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. For 5 years after first arriving in America, Srila Prabhupada presents Krishna consciousness primarily to Westerners, from housewives to hippies to heads of state. Then, in November 1971, after a world tour, he returns to Delhi with some of his followers. The mayor receives him with the fanfare that greets a homecoming patriot. Prabhupada quotes Lord Chaitanya, "It is the duty of those born in India to benefit others by spreading Krishna consciousness. This is India's greatest glory." So Prabhupada returns back to India in 1971 और 1965 में गए थे. So we can see around 4 to 5 years after. और उस टाइम पे मतलब कि इट इज टोल्ड कि व्हेन प्रभुपाद कम्स बैक, उसके बीच में भी एक बार आता है जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. सो व्हेन ही कम्स इन बिटवीन, वो आते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, क्योंकि उस टाइम पे रुपया आ गया था, इसको ग्रो करने लग रहा था. तो दिल्ली एयरपोर्ट से ही टेक्स टैक्सी, और जब वो वहां पे जहां पे उनको रुकना था वहां पे पहुंचते हैं, तो प्रभुपाद टेक्स आउट दोज 40 रुपीज. याद है जो आपको सबसे पहली बार जब गए थे, तो वही 40 रुपए निकाल के दे देते हैं. तो इसका मतलब वो 40 रुपए उन्होंने कभी खर्च किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी उसको कन्वर्ट करवाया ही नहीं. तो वो क्यों 40 रुपए निकाल कर फिर वो उसको दे देते हैं कि टैक्सी वाले को. सो एंड देन दिस टाइम्स व्हेन ही कम्स विद हिज डिसाइपल्स, कि अभी जब बहुत सारे लोग हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं,
तो जो दिल्ली के मेयर हैं वो उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। सो एक्चुअली प्रभुपाद वाज नोइंग वन थिंग कि इंडियंस का ना सिचुएशन थोड़ा सा उल्टा है, वो लोग वेस्ट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने क्या किया, वेस्ट में जाके प्रचार किया और वेस्ट के लोगों को जोड़ा। सो व्हेन द वेस्टर्न गॉट कनेक्टेड, जब वो लोग इंडिया में आए तो अभी ये लोग इंडिया में प्रचार करेंगे। और आज के दिन जो हम इस्कॉन देखने लग रहे हैं, वो इस्कॉन इंडिया के लोग प्रचार करके नहीं बना है, वो अमेरिका के लोग आए थे, उन्होंने प्रचार करके, और जो भी आज के दिन हम इंडिया में देखते हैं, दे स्टार्टेड एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि उन लोगों का नेचर ही वैसा रहता है, थोड़ा सा ना दे रिस्क टेकर्स, और ना उनको मजा आता है कुछ तो एडवेंचरस करने में, और प्रभुपाद ने उनकी उसी चीज को यूटिलाइज किया। तो अभी प्रभुपाद इंडिया में आ गए हैं, और पूरे 1977 में प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा था, 1977 में। तो 1965 से 1977 तक 12 साल के अंदर प्रभुपाद पूरे ग्लोब के 14 चक्कर काट चुके थे। 14 टाइम्स ही हैड क्रॉस्ड ओवर द कंप्लीट वर्ल्ड, मतलब कि हर एक कंट्री, हर एक कॉन्टिनेंट में प्रभुपाद गए थे। इवन रशिया में भी, उस टाइम पर रशिया अलाउड नहीं करता था, लेकिन प्रभुपाद हैड वेंट टू रशिया आल्सो। और आज के दिन इंडिया से जो दूसरे नंबर पे ज्यादा कृष्णा की डिवोटीज है, वो रशिया में है, और वो जस्ट किस चीज के कारण प्रभुपाद गए थे, और उसकी भी स्टोरी है, वो सुनाएंगे आपको। अभी ये देख लेते, नहीं तो इस बार भी ये वीडियो रह जाएगी फिर। A unique gift to the world. 30,000 Indians gather nightly at the Delhi fairgrounds to see the Western devotees and hear Prabhupada speak. To bring about this change in India, that the revival of Krishna consciousness, Prabhupada's plan was to bring his dancing white elephants. He told us that when I bring my Western disciples to India, they will all come to see my dancing white elephants. So we were actually very fond of being Prabhupada's dancing white elephants. We took that as the special mercy of Prabhupada on us, that we could be his dancing white elephants and help him in any way we could to preach Krishna consciousness in India. Prabhupada was told by an astrologer in Navadip in West Bengal that when he saw Prabhupada's face, a photo of Prabhupada, he said, this man, he has the ability to make a house in which the whole world can live peacefully. To make a house in which the whole world can live very peacefully. And when I told Prabhupada that, he said, yes, that is my mission, that within Krishna consciousness, the whole world can live peacefully. While the Hare Krishna movement spreads worldwide, Srila Prabhupada wants to nurture its roots in India. He journeys to Mayapur, West Bengal, the birthplace of Lord Chaitanya. It was Lord Chaitanya who inaugurated, 500 years ago, the congregational chanting of God's holy names. In Mayapur, devotees purchase a small tract of land and start constructing an international guest house. For a handful of devotees who know nothing about construction, this is not an easy task. Srila Prabhupada directs and encourages them. For ourselves, he says, we are happy and satisfied living in a grass hut. But if we simply have a hut, who will come here? The more we develop our land, the more people will be attracted. Prabhupada plans to build a temple of understanding to house the world's largest planetarium, and around it, a spiritual city with schools, shops, farms, and many temples for worshiping Lord Krishna. Within the hearts of India's people is a natural respect for the eternal Krishna-conscious culture. Many come forward to take part in Srila Prabhupada's movement and accept initiation from him. No one should go hungry within a 10-mile radius of the temple, Prabhupada instructs.
In March 1972, devotees start the ISKCON Food Relief Program, distributing prasad, vegetarian food offered to Lord Krishna. गोकुल धाम स्पेशली बीमार गौ माता की सेवा की जाती है। गौ माता के साथ साथ कुत्ते, बिल्ली, As the Mayapur project develops, Prabhupada invites his disciples from 6 continents to join together yearly on the anniversary of Lord Chaitanya's appearance. Prabhupada wants them to be purified and inspired by remembrance of the Lord in his holy land. In Vrindavan, Srila Prabhupada treats his followers to a guided tour of the holy places and personally relates Lord Krishna's pastimes. The devotees relish a bath in the sacred waters of the Yamuna River. Prabhupada acquires land in Bombay, India's most cosmopolitan city. Although he has only a hut for a temple, Prabhupada envisions an international cultural center. His ambition is to give as many people as possible access to the nectar of transcendental life, whether through philosophy, service, or spiritual food, so that everyone can become happy, hopeful, and peaceful. Dr. N.D. Desai, a leading Bombay industrialist, recalls. From 1971 through 1977, I must have met Prabhupada many, many times. And each time I met Prabhupada, I would try to find fault with him. And even I would try to make him angry, or I once even tried to find out whether he was greedy. I just couldn't find any fault with him. In fact, in matter of business life or daily life, we do try to see the weakness of the other person, and sometimes we try to, as a businessman, try to take advantage. But here was a person who just wouldn't become agitated. There was absolutely no lust in him. There was no greed in him. There was, I couldn't see a spot of jealousy in him. And then I realized, after 6 years of that he was a very empowered, divine person. Gradually, Srila Prabhupada says, I am seeing all my dreams being fulfilled. In Bombay, a spacious marble temple, a theater, a restaurant, a library, and a twin-towered 7-story hotel. In Mayapur, the planned spiritual city develops. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. In Vrindavan, the popular Krishna Balaram Temple, an international guest house, and a secondary school. Prabhupada sees his society grow into a worldwide confederation with more than 100 temples, restaurants, institutes, schools, and farm communities. 500 years ago, Lord Chaitanya predicted that one day the holy name of Krishna would be heard in every town and village of the world. By the mid-70s, Hare Krishna becomes a household word. When I first met the first Hare Krishnas, I can remember how surprised I was, and really I wondered what this meant. The costumes and the chanting and the shaved heads appeared a little strange, a little bizarre to me. But the more I came to know the movement, I came to find that there was a striking similarity in the essence of what they were teaching and saying, and in my understanding of the original core of Christianity. That is, living simply, not trying to accumulate worldly goods or profit, living with compassion toward all creatures, sharing, loving, and living joyfully. I am impressed with how much the teaching of one man in the spiritual tradition that he brought has impacted itself into the lives of so many people. So in my own view, his contribution is a very important one and will be a lasting one.
As a child, Srila Prabhupada celebrated Rath Yatra near his home in Calcutta with his playmates. Years later, he is still celebrating the Rath Yatra festival, but now on the main streets of 20 large cities around the world, and with hundreds of thousands of disciples and guests. People follow, imitate Americans. I am traveling all over the world. Everywhere I see they're trying to manufacture the skyscraper building, imitating your country. So, if you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole world will follow you and it will be Vaikuntha. There will be no more trouble. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Whether before huge crowds or a few disciples or alone, Srila Prabhupada's mood of devotion prevails. Gauranga gulate jhure, Nitalila tare jhure. Gauranga gulate jhure, Nitalila tare se jana bhakti hari. Wherever in the world he happens to be, Srila Prabhupada follows a regular daily schedule. In the quietude of the early mornings, he goes out for lengthy strolls and shares intimate moments with a small group of students and guests. Rejecting superficial and dogmatic thinking, he carefully guides his students to increased insight and understanding. After his walk, Srila Prabhupada greets the deities of the Supreme Lord, offers obeisances, and lectures on a verse from Srimad Bhagavatam. So you may have $2 million, I may have $10, you may have $100. Everyone has got some riches. That is admitted. But nobody can say that I have got all the riches. That is not possible. If somebody can say that I have got all the riches, he is God. That is spoken by Krishna. Nobody has said in the history of the world.
येस रेणुका. Since last 2-3 months जेव्हापासून मी आस्था जॉईन केलंय, आय एम सोशली इनएक्टिव्ह. सो Krishna says, Bhoktaram Jaggadhamacam Sarvaloka Maheswaram. I am the enjoyer of everything. And I am the proprietor of all the universe. Who can say that? That is God. In the afternoons, Prabhupada meets with guests, here in Los Angeles with scholars of religion. Your pride, your property, your family, your bank balance, your skyscraper building, all taken out. Yes, finished. Got out. This is God. Now understand God? To believe and not believe, God will come one day. He'll take you, take your everything and get out. That is stated in the Bhagavad Gita. Those who are not believer in God, to them I come as death and take away everything. Finish. That one has to believe. Yes, as sure as death. Then God is sure. So unless one is madman, he cannot say there is no God. Anyone who denies the existence of God, he is a madman. Prabhupada, wouldn't it be better to say he's blind, he's stupid? Yes, the same thing. The mad is the sum total of all stupidity. Festival takes place. Wherever Srila Prabhupada is, he continues to write prolifically. Rising long before dawn, he spends hours translating and commenting on original Sanskrit and Bengali texts. Or sometimes they wash their hands and feet before entering the temple. His most significant contribution is his books. Srila Prabhupada sees 60 million distributed in 28 languages. Professors from dozens of major universities use them as standard texts and write appreciative reviews. He also did a very important work in introducing to the Western world for the first time the devotional philosophy of Sri Krishna Chaitanya. Not only did he introduce these texts, but he introduced them in a way that was quite different from the other translations that had been made. I'd read so many different translations, for example, of the Bhagavad Gita, which had all been interpreted from the impersonalist type of philosophy of the Advaita school. And here, you might say, for the first time was a truly devotional translation, a spiritual translation of the text, which I felt really came much closer to the true meaning and the purpose of the Bhagavad Gita. Established in 1972, the Bhaktivedanta Book Trust exclusively publishes Srila Prabhupada's works. It becomes the world's largest distributor of books in the field of Indian religion and philosophy. For Srila Prabhupada, the transcendental knowledge in these books forms the basis of the Hare Krishna movement, a movement prophesied to grow for the next 10,000 years. In 1977, despite his failing health, Srila Prabhupada continues traveling and teaching. February 1977, the world's largest pilgrimage, Kumbh Mela in Allahabad, India. Millions gathered to bathe in the holy Ganges. Although physically weak, Srila Prabhupada attends. His disciples perform kirtan and distribute books and Back to Godhead magazines. Practically from the very beginning, Srila Prabhupada gave us notice that he would not always be with us. Of course, it was only a few months after he opened the storefront on 26th Second Avenue that he became very ill, and he had that heart attack or whatever it was, and it seemed even at that time that he might leave then. And he warned us. He said, I am an old man. I may leave at any moment. The notice is already given. 70 that has already passed. So Prabhupada was never under any illusion that he would remain forever in this world with us. But he said, my instruction will remain. And he trained us from the very beginning to follow his instruction and to use our individuality to execute his instruction for the glorification of Krishna.
Although his illness steadily worsens, Srila Prabhupada speaks nightly at a program in Bombay. In May, he journeys to Rishikesh at the foot of the Himalayas to try to regain his health. There, he continues to instruct his intimate disciples. Then in October, Srila Prabhupada returns to his old home, Vrindavan, to spend his final days. Even though he is physically incapacitated, Srila Prabhupada's intellect remains clear. He continues dictating translations and comments on his life's work, Srimad Bhagavatam, until days before he departs from this world. Everything is active, moving by the supreme desire of Krishna. This consciousness is Krishna consciousness. November 14th, 1977, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada passes on. That divine personality who spoke on different subjects with thousands of meanings, who imparted knowledge in thousands of ways, and who inspired thousands of devotees, has now returned to his Lord, Sri Krishna. Being kind to his devotees, Lord Krishna gave them the association of Srila Prabhupada. Being independent in his desires, the Lord has now broken that association. Yet Srila Prabhupada remains. He lives forever in his teachings, and he lives forever in the hearts of his followers as their ever well-wisher. Did you observe one thing? That Prabhupada had got that instruction to write in English. In which year? 1922. And 1977, when you saw that last movement. Actually, that was the video of the last day when Prabhupada passed. और उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि वो ना one disciple was holding the mic here and he was speaking. So at that time also he was translating. So this is what it means to take something very seriously. सोचो आपने 1922 में आपके गुरु ने आपको कहा कि आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है ना. Anyone would have who might have any ulterior motive, जिसकी कुछ और इच्छा होती, वो बंदा जैसे इतना फेमस होता वो सब छोड़ देता. अब सोचो प्रभुपाद ने कभी नहीं छोड़ा. प्रभुपाद वाज ऑलवेज राइटिंग. जस्ट उन्होंने अंतर बदल दिया क्योंकि जब इस्कॉन इतना बड़ा हो गया था तो ही डिडंट हैव टाइम. उनके पास टाइम नहीं रहता था कि कब लिखेंगे. तो प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद का शेड्यूल मैं आपको बताऊंगा तो हम लोग घबरा जाएंगे. आप सोचिए कि प्रभुपाद रात को 8 बजे सो जाते थे. 8 o'clock he will sleep और 12 बजे उठ जाएंगे. और 12 बजे तक सब लोग सो जाते थे और ना प्रभुपाद 12 बजे उठते थे. 12 बजे से सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक, जब तक आरती शुरू नहीं होती थी, तब तक प्रभुपाद क्या करते थे, जो डिक्टाफोन था, मतलब कि प्रभुपाद ने लिखना छोड़ दिया था क्योंकि लिखने में तो बहुत समय लगता था, तो प्रभुपाद क्या करते थे, रिकॉर्ड कर देते थे. सारे संस्कृत की जो भी बुक्स हैं उनको अपने को पास में रख के, और फिर जो उनको लिखना रहता था इंग्लिश में, लिखने की बजाय उसको रिकॉर्ड कर देते थे. तो रिकॉर्डिंग करके और वो रिकॉर्डिंग को फिर कोई और लोग सुन के टाइप करते थे और फिर प्रभुपाद को दिखा देते थे कि देखिए हमने ये लिख के, आपने जो बोला था वो ये रिकॉर्ड हुआ है
और वो टाइप कर दिया गया, तो आप एक बार चेक कर दो, तो प्रभुपाद चेक करके फाइनल। इसीलिए आप देखेंगे इतनी सारी बुक्स हैं प्रभुपाद की, इतनी सारी बुक्स है कि हम सोच भी नहीं सकते। भगवत गीता जस्ट एक है, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता से कितनी बड़ी है आप सोचिए। भगवत गीता है 700 वर्सेज, 700 वर्ष है भगवत गीता में। श्रीमद् भागवतम है 18,000 वर्सेज। अब 18,000 मतलब लगभग 20 से 25 गुना हो गए 700 के। तो वो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश में। एंड प्रभुपाद हैज कन्वर्टेड चैतन्य चरितामृत। अब चैतन्य चरितामृत कृष्णा बुक इज देयर, सो मेनी स्मॉल बुक्स आर देयर, बहुत सारी बुक्स। तो प्रभुपाद डेली रात को लिखते थे, बिकॉज हिज अंडरस्टैंडिंग वाज दैट कि जो भी हुआ है वो सब मेरे गुरु ने कहा था तो हुआ है, तो मैं अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को नहीं छोड़ सकता हूं, मैं लिखता रहूंगा। और इसलिए आप देख सकते हैं लास्ट टाइम व्हेन ही इज लीविंग हिज बॉडी, शरीर में कुछ भी नहीं है, एट दैट टाइम वाज आल्सो ही इज ट्रांसलेटिंग। तो इसका मतलब उनको कभी भी रुपए पैसे से कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं। कुछ भी रुपया पैसा आ रहा था वो वैसे ही रह रहे थे। उनको एक ही मोटिव क्लियर था कि मेरे गुरु ने कहा था कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में लोगों को बताओ और इंग्लिश में लिखो, तो मैं वो करूंगा, है ना। और आपको इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की हर बड़ी लाइब्रेरी में प्रभुपाद की किताब मिलेंगी। मैं IIT खड़गपुर में पढ़ता था, वहां पे हमारी लाइब्रेरी में प्रभुपाद की किताबें रखी हुई थी। तो ये देखा है मैंने खुद में, सोच बड़ा अच्छा लगा ना, बिकॉज ईच एंड एवरी लाइब्रेरी, जो भी ऑथोराइज लाइब्रेरीज हैं, सबके अंदर प्रभुपाद की बुक्स है। सो विद दिस वी कैन टेक सम मोटिवेशन कि हमें भी समझना चाहिए कि ऐसा इंसान अगर ना भगवान के प्रति डेडिकेशन दिखाया है उन्होंने, और उनका कभी कोई खुद का मोटिव नहीं था। खुद का मोटिव होता तो वो जैसे ही फेमस हुए आपको खुद से ही पता चल जाता है कि क्या मोटिव है ना। आज के दिन इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी है, और उस एडटेक कंपनी को जिन्होंने शुरू किया उनका पहले क्या था कि मैं दुनिया भारत के हर एक बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ बहुत ही सस्ते में। और जैसे वो एडटेक कंपनी शुरू हुई, उनके पास रुपया आया, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है। सो फ्रॉम लास्ट 3 years he has not taught anyone, so he is not teaching only, he left only teaching। अभी वो आराम से मस्त एकदम बैठ के बिजनेस संभाल रहे हैं अपना। तो विद दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि लोग इस दुनिया में कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उनका पर्पज रहता है कि कैसे न कैसे करके हम रुपए कमाएं। लेकिन शिला प्रभुपाद वाज वन दैट पर्सन who never thought कि what he is getting, he always thought कि जो उनके गुरु ने कहा था मुझे उसको पूरा करना है बस। एंड इसीलिए उनसे इतने सारे सिंसियर लोग अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि जो भी सिंसियर लोग रहते हैं उन लोगों को ये नहीं चाहिए रहता है कि ना हमें वहां से क्या मिलेगा, उनको ये चाहिए रहता है कि हमें एक जेन्युइन बंदा मिले। इन माई लाइफ आई हैव सीन सो मेनी पीपल, पर्सनली मैंने अपने जीवन में, क्योंकि हम लोग काम करते हैं लोगों से डील करते हैं, मैंने देखा हर किसी का अपना मोटिव रहता है। लेकिन मैंने देखा शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के, तो मैंने देखा कि जो डिवोटीज रहते हैं उनका कोई मोटिव नहीं रहता। पर्सनली दे डिडंट हैड एनी मोटिव, वो जस्ट आपको कुछ देना चाहते हैं, खत्म बात, उनको पर्सनली आपसे कुछ नहीं चाहिए। सो दिस वाज द वन थिंग दैट आई सॉ, एंड दिस वाज द वीडियो आई सॉ इन 2010। तो अभी 14 साल हो चुके हैं, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो। और आपने देखा होगा इस वीडियो का नाम है यूर एवर वेल विशर। एक्चुअली प्रभुपाद हरदम अपने लेटर में नीचे लिखते थे यूर एवर वेल विशर। सो प्रभुपाद हम लोगों के सही में ही एवर वेल विशर है। एंड अगर जो प्रभुपाद ने रास्ता बताया है अगर हम उसे फॉलो करेंगे, वी कैन बी रियली हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू अहेड, एंड आई वांट टू से दैट कि जब भी आपको मौका मिले आप प्रभुपाद की लीलामृत पढ़िए। बुक है प्रभुपाद लीलामृत, ब्लैक कलर की बुक है, छोटी सी है, 70-80-100 रुपए की आती है, वो आप ले लीजिए और पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो और जो जो कैलकाटा के हैं उनके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन कि कैलकाटा में इस्कॉन का मंदिर है,
इस्कॉन मिंटो पार्क में। अगर आप नहीं गए हैं तो एल्बर्ट रोड, 3C एल्बर्ट रोड, मिंटो पार्क, वो मंदिर पहला इस्कॉन का मंदिर था जो शिला प्रभुपाद ने इंडिया में शुरू किया था। और उस मंदिर के अंदर प्रभुपाद का रूम है अभी भी, जिस रूम में प्रभुपाद रुकते थे। और उस मंदिर में जो भगवान के विग्रह है उनको खुद प्रभुपाद ने सेवा की है। तो आप लोग जो भी कलकत्ता में है, 3C एल्बर्ट रोड मिंटो पार्क में जाइए, और उसके सामने एक तालाब है, उस तालाब में प्रभुपाद नहाए हैं। तो आपको अगर टाइम मिले कलकत्ता में तो आप जाइए, 3C एल्बर्ट रोड मिंटो पार्क। मिंटो पार्क आप लोगों को पता है, सब लोगों को, वहीं पे है इस्कॉन का मंदिर। ठीक है, चलिए, तो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। आई होप इट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग, एटलीस्ट फॉर मी, टू सी शिला प्रभुपाद अगेन। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम।